Am I coming? Yes, please come. Good afternoon, sir. Mohammad Shaquib, Yes, sir. please be seated. Yes, thank you, sir. So please tell about yourself. Sir, I am Mohammad Shaquib, coming from Bahraj, Uttar Pradesh. Slightly louder. We are all Sir. above 60. Okay, sir. Sir, myself Mohammad Shaquib. I am coming from Bahraj, Uttar Pradesh. I did my schooling from Bahraj, from nursery to 12th, and then I did my civil engineering from IIT Patna and graduated in 2023. That's all? No hobbies? Sir, my hobby is playing and watching cricket and watching Hindi movies, sir. Okay. Okay, so you live close to Pani Ki Tanki. Yes, sir. Now, how is the size of Pani Ki Tanki decided? Sir, first we decide the per capita demand and then the population of the city or the population. Yes, so what is the standard per capita demand? Sir, it is around 200 LPCD, liters per capita day, per day. We design with 200 LPG. Yes, sir. Sir, And out of this, let's say there is a choice between drinking water and recycled water, yes, right? sir. So how will you decide? There are two tanks to be built, one for recycled water, Yes, sir. one for drinking water. So drinking water, how will you decide? Sir, based upon the sir, consumption, human consumption, sir, and for Yes, drinking means all actual uses which for human consumption. yes, sir. It can be drinking, bathing, all those things. Yes, sir. So how much? Sir, not sure, sir. 135 LPCD. Huh? 135 LPCD for bathing, so and so 135. I'm not sure, sir. 135. Yes, sir. इसको चेक कर लेना भाई. Yes, sir. Why it is whatever LPG, LPCD. 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 All right. And what does Shakib mean? The Shaquib means shining star. Shining star. Very good. अब मजा आया. You're smiling. Now we're liking it. Good. And what is Salarganj? Who is Salar? Sir, not sure, sir. Okay. कुछ बना लेना अगला पूछो Now what is Bahraj? अगर उसको भी नहीं पता So Bahraj is a city name, sir. हाँ, मतलब क्या है बहराइच का? Not sure, sir. SDM क्या होता है? SDM, sir, sub district magistrate, sir. सब डिस्ट्रिक्ट होता है कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है? Sub division magistrate. सब डिविजनल होता है ना? Yes, sir. आपने सब डिस्ट्रिक्ट टाइप किया, मैं वही सोचा था ना, सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ से ढूंढ लिया? नॉमेनक्लेचर बोल दिया. सब डिविजनल होता है, है ना? ठीक है, that's all. So your both parents are doing own business. Yes, sir. Yes, sir. So there is a shop. So There is a both shop. So both sit alternatively, or when some finds Huh? some find free time means some is available. I agree. Yes, sir. And how come your father's income is zero and mother's income is there? Sir, my mother is basically the ITR is filed on my mother's name, sir. So mostly my mother sits there. अच्छा, So तो चलिए ठीक है. So are they covered under GST? yes, sir. They covered? So they belong to low income group, so they are covered, sir. Under GST, shop as a business, Yes, sir. is it covered under GST? Yes, sir, it is covered under GST. What is the turnover up to which you are exempt from GST? No. So not sure about the new policy. So up to 20 lakh rupees you are covered, you are not covered under GST. But what they are doing, they are running a shop. Yes, sir. So what are they doing? So selling, sir, daily basis items. So they are buying the things Yes, sir. after paying GST Yes, sir. and selling the things. Yes, sir. So let's say I buy a hosiery item. For 80 rupees I buy and sell at 100 rupees. Yes, sir.
So how much GST I pay and how much I can charge? Let's say 12% is the GST. Yes, sir. So, sir, 12%, sir. 8. Sir, 9.6 rupees, sir. You have to pay as a GST. Yes. And how much I'll charge? And, sir, then, sir, 10.4 rupees, then you will extra charge. Yes. So now you get the point? Yes, sir. So GST as such leads to the profit for the small shopkeeper, Yes, sir. right? Yes, sir. Of course, if he wants, he can share the profit with the customer Yes, sir. and sell it at 2 rupees less. That's what they do. Quite often they sell slightly less. Okay, which are the items, you know what are the slabs of GST? Slabs. So I have not read the current policy. I will read it, sir. You don't have to read, you have to be just aware. बाजार रोज जाते हो Yes, sir. तो जीएसटी तो लगता है, बिल तो पढ़ते हो कि नहीं? बिल नहीं पढ़ते सर पढ़ते हैं सर. तो मूवी देखने जाते हैं उसमें कितना जीएसटी लगता है? Not able to recall, sir. Sorry, sir. बिल ध्यान से देखा करो, उसमें जीएसटी लगा होता है. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. There are 4 slabs of GST. You should be aware. Okay, sir. किस चीज़ पे? तो जीएसटी जो है ये कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है? Sir, direct tax. डायरेक्ट है. Sir, direct tax, I guess. हैं? Not sure, sir. Not about it. Not. भाई बात सुनो, तुम गेट के ऑल इंडिया रैंक 6 हो, ठीक है ना? Yes, sir. तो तुमसे तगड़े सवाल पूछेगा जो भी पूछेगा. Yes, sir. हल्के नहीं पूछेगा. Yes, sir. ना देख लेना थोड़ा. ठीक है? Yes, sir. चलो. What happened last year? You couldn't make it. Sir, yes, sir. I was short of 27 marks. My mains was not up to that mark. Because interview, I remember you. Yes, sir. Interview what score you got? Sir, 124. Good score. So that blast, Yes, sir. railway blast, I remember. It is my BTech project, sir. BTech project. Yes, sir. So I don't like to ask on project. What is your pet subject in engineering? Sir, RCC, then the fluid mechanics, and sir, steel structures. Where do you use steel structures and where do you use RCC? Sir, when the span of the structure is more, and then we generally prefer the RCC structures. And sir, when sir RCC structures reliability is more, then sorry sir, steel structures reliability is more than RCC structure. So these steel structure can be used for when the intended period, design period is more, like 100 years or above. Like railway bridges. Yes, sir. So where there we use RCC, steel structures. ठीक है. Then you belong to Bahraich. So what are the causes of floods there? Sir, so now it is moving towards the urbanization. So most of the area is concreted. So the water is not able to find its way to infiltrate, infiltrate to ground or recharge the aquifer. And sir, there is a river, two major rivers, Saryu rivers and Sharda river, I guess. Sir. So maybe. बड़ी नदी है एक छोटी है, एक शारदा है छोटी है और सरयू बड़ी है. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो a lot of water comes there. Yes, and sir, there is an urbanization at the bank of it. Means lots of construction is there near the bank of the river. So that's why due to the overflooding action, sir, when river flows at its peak, we observe that flooding occurs. And you are confusing. Since the Nepal water comes through these two, there are two major rivers. Yes, sir. Major rivers of contributing to the Ganga water. Yes, sir. 90%, 80% आता है उनसे. Yes, sir. So a lot of water comes from the Nepal. Yes, sir. So that is tamed at 3 places. Yes, sir. One is Nalakmatta Dam, it is very old dam. Then Girzapuri Barrage, then Sharda Barrage. Still they are not able to tame it. ठीक है ना? Okay, sir. So that is the reason there is a lot of flow and villages are being impounded. कितने इस बार भी कई 10-15 गांव चले गए. Yes, sir. है ना?
And it is just 90 kilometers on Lucknow. Nobody talks about that. हम ये उनको पट्टी पिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. कंगना रनौत बड़ी अच्छी है. तो even 12-13 villages have just washed. Yes, sir. Anyway, so it is the main reason, and remedy is certainly more dams and everything. Yes, sir. There is no industry as such. No industry. Unemployment galore. No, sir. Okay. So this is about your RCC, steel structure and floods. ठीक है ना? Then BTech project कर लिया मेरे को, क्या पूछूं? Nothing. Yes, sir. Okay, so what is the difference between Euler's equation and Bernoulli's equation? Euler's equation. Sir, in Euler's equation is a force equation in which we mainly consider two forces, gravity force and then pressure force. And sir, when we integrate it, we convert this force equation into the energy equation, and this energy equation becomes the Bernoulli equation, in which we use certain assumptions like incompressible flow, inviscid flow, and the flow is steady. So when we integrate this Euler's equation, we convert the force equation into an energy equation. Okay. So this is called as the Bernoulli equations. Okay, what are the different places where we use Bernoulli equation? Sir, Practically examples. sir, say Bernoulli equation. So practical example, sir. Sir, it is used to measure the height of an mountain, sir. Bernoulli, there we can use the Bernoulli equation as well. Is it? Yes, sir. Mountains, for measuring height of mountains, we use barometer. Barometric pressure. Oh yes, sir, barometric pressure. There we use to measure the height of it. Bernoulli equation, sir. Sir, in case of How about discharge of water through a pipe or discharge of a fluid through a pipe? Yes, sir. So these are based upon the Bernoulli equation, sir. We use it. Yes, sir, we use it. Any other example? Sir, when the water is being transferred from a higher reservoir to a lower reservoir, then we use Bernoulli equations to. Sorry, sir, not. Okay. What are rotational and irrotational flows? Sir, when a fluid particles rotates about its center of mass while moving in the direction of flow, then it is called as the rotational flow. And when a fluid mass do not rotate about its center of mass while moving in the direction of flow, then it is known as the irrotation. Can you give example of a rotational flow? Irrotational flows are free vortex flow No, rotational flow. and it's a forward vortex flow. Forced vortex. Yes. Apart from vortex. Sir, What type of flow is in boundary layer? Sir, in boundary layer, sir, above the boundary layer, I guess, sir, it is irrotational flow, And within the boundary layer? rotational flow. Where does the rotation come into the picture in the boundary layer? So due to the viscous force, sir. Viscous forces. Yes, sir. Are the viscous forces present outside the boundary layer? Sir, I think the velocity is constant, so viscous force may not be there. Okay. What is point of contraflexure? Sir, it is the point where the moment changes its sign, means sagging moment will change to hogging moment, where the moment changes its sign. What type of stresses will be there at this point? Sir, at point of contraflexure, sir, bending moment will be zero, so bending stress will be zero, sir. How about shear stresses? So shear stresses will be there, sir. It depends. So within a material, what type of stresses will be there? Sir, bending stress, torsional stress, shear stress, and then sir, compressive stress. These are the issues. Okay. What is slenderness ratio? Sir, slenderness ratio is defined as the ratio of effective length to its minimum radius of gyration. Okay. And what is minimum radius of gyration? So minimum radius of gyration. So it is defined as the radial distance at which the whole mass can be supposed to be concentrated
and this will provide the same moment of inertia as the actual distribution of mass. Okay, thank you. Sir, So Shaquib, can you tell me the water tank, which is your landmark address, right? Yes, sir. That is a circular water tank or that is a rectangular water tank? Sir, circular water tank, and it is supported on columns. It is supported on columns. Yes, sir. Why do we prefer circular water tank? Sir, it is easier to design. So maybe. So it is easier to design and what- maybe construct. How? Sorry, sir, not sure, sir. What are the codes used for design of water tank? Sir, IES 3370 is used for the design of the water tank. It uses LSM or WSM? Sir, in water tank we prefer uncracked section, so we use a WSM, working stress method. Why not LSM? Sir, in LSM we consider the cracked section, so we generally do not prefer it in case of water tank. So that's why we. Why? So cracked section may cause the seepage or problem. Means we need better safety, factor of safety. So that's why we use WSM. For construction of water tank, which kind of cement you will use? Sir, low heat of hydration cement, Why? so that cracks will be less. So heat generation will be less. Water loss will be less. So cracks generator will also be less. Sir. That's why we use low heat of cement. Not sure, sir. If heat of hydration is not a concern, Yes, sir. because even though I use cement with high heat of hydration, Yes, sir. then also it will not be a problem because the thickness of water tank is very, very small. Sir, not sure about the cement, but the grade of concrete should not be less than M30. I don't know about the cement. What is datum? Datum, sir, it is defined. It is the assumed level from which we measure the energy head, sir. In terms of surveying? Sir, in terms of surveying, sir, from which we, sir, datum, it is a level of zero elevation, sir, or earth curvature. From it we measure the different RL. For our country, what is datum? Sir, mean sea level at Mumbai, sir. I'm not sure about the actual value, sir. For Pakistan, what is datum? It may be different for their country, sir. So sea level is generally datum. Yes, sir. Sea level is generally taken as datum. What would be the case for the country like Nepal or Bhutan? Not sure, sir. What are linear projects? Linear projects. Not heard about it. Sorry, sir. Sir. Okay, so your interview is over. Yes, sir. We'll call you back for feedback. Okay, sir. Thank you. हाँ बस कुछ भी ले लो Sir, may I come in? please Yes. sit. Thank you, sir. So Mohammad Shaquib, you are a very good candidate. Yes, sir. Thank you. अब थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, Okay, sir. ठीक है? क्योंकि आप सारे टाइम जो बंदा सवाल पूछ रहा है उसी की तरफ देख रहे हो, Okay, sir. तो बाकी लोग फिर सो जाएंगे या फिर वो अपना मोबाइल देखेंगे Yes, sir. और तुम्हारा नंबर जो लास्ट आंसर है उसके बेसिस पे तुम्हें नंबर मिलेगा. इज इट नॉट गुड? Yes, sir. Sorry, sir. So 60% time look at the person who has asked the question, 40% time look at others also. Okay. और इतने गंभीर क्यों हो? Sir. रात सोए नहीं क्या? नहीं सोया हूँ, सर. थोड़ा सा चेयरफुल हो जाओ, अपनी एनर्जी, कुछ एंथुजियाज्म डालो अपने इंटरव्यू में, ठीक है? Okay, sir.
और इंटरव्यू वाले दिन 2 घंटा पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लेना, जी सर। थोड़ी एनर्जी आएगी। ओके सर। ये बटन कोट के बंद करने की जरूरत नहीं, खुले भी रख सकते हो, ओके सर। ठीक है, एज कंफर्टेबल टू यू, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हाथ यूज़ कर रहे थे शुरू में, थोड़ा बहुत हाथ भी यूज़ करिएगा, ओके सर। ठीक है। शेव करनी है कि नहीं करनी वो भी देख लीजिएगा। यस सर। थोड़ा मतलब गेटअप ठीक होना या तो बियर्ड प्रॉपर रखो या शेव करो। सर शेव करूँगा। चाहिए, यू डिसाइड, यस सर। टोटली योर चॉइस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ आपका चश्मा भी नहीं है, यस आपने चश्मा भी पहन लिया तो थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है। ठीक है। हाँ सर, टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन दे आस्क्ड टू वेयर द रिमूव द ग्लासेस। वो फोटो खींचते समय। यस सर। कितनी पावर है सर -4। तो वो ठीक है, ठीक है। बिना लेंस वाला चश्मा पहन लेते हैं, तो वैसा भी मिलता है उनके पास, होता है। सिर्फ फ्रेम का चश्मा होता है, वो पहन के एंजॉय लेते हैं, तो टोटली अलग लग रही है, यस सर, अलग है। ठीक है ना। लग रहा है जुड़ा भाई की जुड़वा भाई का बाकी तुम पानी की टंकी के पास रहते हो तो पानी की टंकी का सब कुछ पता होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। आई विल रीड अबाउट। हाँ, पानी कितना चाहिए, और फिर कोई ना कोई, जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से आधे तो लुटन दिल्ली में या दिल्ली के ऐसे एरिया में रहते होंगे जहाँ पर रिसाइकिल वाटर आता है, यस सर। तो वो रिसाइकिल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है उसका, वो भी पता होना चाहिए। रिसाइकिल कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक इन फ्लशिंग, गार्डनिंग, बट फॉर ड्रिंकिंग एंड बेदिंग वी यूज दी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। तो उनका डिफ्रेंशिएशन है। यू कैन टेल कि साहब आई विल प्रोवाइड दी दिस रिसाइकिल्ड वाटर फॉर दिस पर्पजेज एंड एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ओके सर। ठीक है ना, तो बेसिक। और वो देखते कैसे हैं कि ये वाटर सूटेबल है कि नहीं, तो बीओडी देखते हैं उसका। एवरी डे दिस रिसाइकिल, एवरी डे टेस्टिंग हैज टू बी डन। वो सारी चीज़ें देख लेना। यस सर। यू कैनॉट बी अनअवेयर अबाउट। यस सर। ठीक है। देख लीजिए। तो आपके जितने आपको पिछली बार मिले थे उतने तो आराम से मिल जाएंगे, और थोड़ी मेहनत करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। यस सर, आई विल ट्राई सर। आपको पिछली बार 124 मिले थे ना, 124। तो 125 उतना तो आपका है ही। रिटर्न में भी अच्छा कर लिया है, तो नो इशू नहीं। और कुछ आप ऐड करना चाहते हो? मैं तो ऐड यही करना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनालिटी बेटर वो करो। यू आर नाउ कॉन्फिडेंट मच बेटर देन लास्ट ईयर, यस सर। ठीक है। तो यू शुड प्रेजेंट और तुम इन मुझे हुए बल्ब लग रहे हो, जले हुए बल्ब चाहिए। ओके सर। थका हुआ होता है। हाँ यस सर। हाँ, कोई उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू ओनली। आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनी PSU। अच्छा अच्छा, ये ठीक पूछा है, जा लगे सकता रहो। हाँ, पूछा जा सकता है कि भाई तुम इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, तुम खाली क्यों बैठे हो? यस सर। तो ये चीज़ है। सर आई वुड लाइक टू ऐड, आप अपना गेट रैंक आपका इतना अच्छा है, बोले इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन। ओके सर। अगर किसी पैनलिस्ट ने आपका डैफ नहीं देखा तो पता ही नहीं चलेगा, ओके सर। सो यू विल मिस दैट। फिर बैकअप प्लान में आप कह सकते हो कि साहब मैं ब्रांच प्लीज में जाऊँगा एंड आई विल शिफ्ट माय टू एकेडमिक्स लाइक दैट। तो ये इसके लिए तो आपको दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप गेट 6 बोलोगे तो आपसे क्वेश्चन भी फिर टफर आएंगे, यस सर। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है सर। बट उसके इसमें पॉजिटिव आपके पास ये है कि यू कैन स्कोर 140 150, यस सर। हायर लेवल से एक हायर लेवल पे आपको जज किया जाएगा। ठीक है सर। So that is better. Okay. So you have this year you have potential of 140. We absolutely feel you can get it. ओके सर। आपके questions to the point थे, बिल्कुल straight थे, which was very good, which was very positive. थैंक यू सर। Okay. So improve करो, बस थोड़ा सा GS को पढ़ लो, जैसे GST वाले रेट आपके पास, आई एम श्योर आपके पास GST नंबर नहीं होगा, इनपुट क्रेडिट नहीं लेते होगे आप, अच्छा सर। वो सब नहीं होता है, तो वो सब आप पढ़ो। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, जीएस के करंट लास्ट 1 मंथ के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं वो पढ़ लो। यस सर। जीएस कम। जिस दिन इंटरव्यू होगा उससे 2-3 दिन पहले के जीएस मेन टॉपिक दिल्ली तो बदल जाता है। वो पढ़ लो। यस सर। ठीक है, तो वो करके रखना, रेस्ट ऑल गुड। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छे से करो, टेक्निकल थोड़ा रिवाइज करो। यस सर। वाटर टैंक पढ़ के जाओ भाई। वाटर टैंक। व्हाट इज इंच टैंक पूछेगा, वहीं से शुरू कर देगा वो। इंच टैंक। यस सर। लास्ट टाइम आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जो
सर एक सर ने पूछा था कि वो बलाश वाला उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो पढ़ा आपने भी पूछा था और वहाँ पर भी पूछा गया था। फाइनेंशियल एस्पेक्ट स्टडी नहीं किया था तो वो उसको फिर वहीं पर भी सॉरी बोल दिया। मतलब यहाँ भी नहीं बता पाए, वहाँ भी नहीं बता पाए। हमने बताया था ना इसकी लाइफ बढ़ेगी तो उससे क्या है कि सेविंग्स हो। यस सर। तो बताया और एक बीटीपी का पूछा था तो वो भी कॉमन है। एंड देन सर और बला उसका पूछा था, आपने भी पूछा वेयर और बराज में डिफरेंस जो है वहाँ पर भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। और फिर पूछा गया था कि वाई यू आर ऑप्टेड फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज, वाई नॉट फॉर कैंपस प्लेसमेंट, ये पूछा गया था। और फिर सर ये लैग्रेंजियन और यूलर्स अप्रोच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ओके। फिर पूछा गया था हाईवे में जो स्ट्रीम है वो दे आर बेस्ड ऑन द लैग्रेंजियन अप्रोच और द यूलर्स अप्रोच, ये सब पूछा गया था। ठीक, तो यही तैयार कर लो, उसमें सारा कुछ कवर्ड है। हाँ कवर्ड है। अभी आपको न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल गए। यस सर। ओके, चलो थैंक चलो यू। सर, मार्क्स 125 हाँ, वो तो बता दिया। सर, 125। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। बट यू हैव पोटेंशियल ऑफ 140। ज्यादा आ सकता है, अपनी तैयारी कर लो। इस बार आपका तैयारी अच्छा है। यस सर, थैंक यू सर।